students of class 7th. Today we will discuss about the chapter number 5, and it is the last heading, Contemporary Ruler of South. Students, in early section you have read about the Mughals and slave dynasty, and अब हम पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी रूलर्स ऑफ साउथ. ओके, तो मुगल अंपायर जो था रिस्ट्रिक्ट थे नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया ओनली. ड्यूरिंग द 15th एंड अर्ली 16th century, the changes and affect North India did not affect the South India. The kingdom of South India, which flourished during the Delhi Sultanate, continued to prosper during the reign of early Mughal rulers. It is only after firmly establishing themselves in north that the Mughals turned towards the south. Till then, two powerful kingdoms, Vijayanagar Empire and Bahmani Kingdom, prospered the most. ये दो विजयनगर और बहमनी, ये दो किंगडम जो थे काफ़ी अच्छी तरह फ्लरिश हुए. तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं. पहला, विजयनगर अंपायर. ओके, द विजयनगर अंपायर was founded in 1336 CE by the two brothers हरिहर एंड बुक्का. विजयनगर एम्पायर की स्थापना जो थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों द्वारा की गई थी. वैन साउथ इंडिया स्लिप्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. जब साउथ इंडिया की पावर जो थी, कंट्रोल जो थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्लिप हो गई. विजयनगर emerged as a powerful and wealthy empire. The most prominent king of this empire was Harihar II and Devaraya I, Devaraya II and Krishnadevaraya. ओके, ये कौन कौन से थे? हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड एंड कृष्णदेवराय. अब आती बात कृष्णदेवराय. द विजयनगर एम्पायर ग्रो इनटू पावरफुल स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेवराय. ही defeated the kingdom of Odisha and Bijapur. During his time, the Portuguese came to India and tried to expand their territories. Administration of Vijayanagar kingdom. The Vijayanagar empire was divided into provinces headed by royal princes or Nayak. The king granted land to these Nayak and they in turn paid a sum of money to the king and provided him with soldiers. ठीक. Krishnadevaraya often toured the empire to ensure that the official worked properly and people were happy. Vijayanagar was situated in the fertile delta of Kaveri river and Godavari basin. विजयनगर empire कहाँ था? कावेरी और गोदावरी रिवर के बीच में. एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड देयर, खेती बहुत अच्छी होती थी. कृष्णदेवराय ऑल्सो प्रमोटेड एग्रीकल्चर बाय बिल्डिंग टैंक, डैम एंड कैनाल फॉर इरीगेशन. उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनवाई. फिर क्या होता बेटा? द रेवेन्यू केम फ्रॉम टैक्सेस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ट्रिब्यूट पेड बाय गवर्नर. द टैक्सेस लेविड वेरीड फ्रॉम 1/6 of the produce to 1/2 of the produce. The king used this money for construction and maintenance of temples, palace and the army. Some of this money was used for public services such as building roads, dam, tank, rest houses, etc. ट्रेड एंड कॉमर्स जो थे फ्लरिश कर रहे थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेवराय. ही वाज पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड ऑल्सो रोट पोएम्स. मलयड़ इन तेलुगु. अमुक्त मलयड़ जो है इसकी लिखी हुई किताब है जो तेलुगु में. द रूइंस ऑफ हम्पी, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, आर नाउ एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. Vittar Swami and Virupaksha temple are two such fine examples of exquisite architectural excellence, and house ornate pillars, huge gopuram, ornate gates and huge hall with carved pillars. ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उस टेम्पल की. नेक्स्ट आ जाता है आपका बहमनी किंगडम. अनदर किंगडम विच रोज to prominence in the Deccan was the Bahmani kingdom. It was established during the 1347 CE.
Ahmad Shah II was one of the prominent ruler of this kingdom, under whom it prospered in 15th century. The revenue system was reorganized to maintain a strong army. He also ensured that the peasants were not taxed heavily. He captured Goa from Vijayanagar so that trade with the Portuguese would come to the Bahmani kingdom. The kingdom encouraged the foreign and gave them high post. These foreigners were referred to as परदेसी. इन उनको फॉरेनर थे, उनको परदेसी कहा जाता था. One such परदेसी was Mahmud Gawan, who rose to post of chief minister. ठीक है, चीफ मिनिस्टर पहुंचा of the Bahmani kingdom. Mahmud Gawan was popular among the common masses, but he also had enemies in the local Muslim group called the Deccanis. This group got him executed in 1481. After his death, the nobles of Bahmani kingdom began to fight among themselves, and the subsequent ruler of the Bahmani kingdom could not control them. They faced several attacks from Vijayanagar. As a result, the kingdom broke into 5 kingdoms: बेरार, बिडार, गोलकुंडा, बीजापुर एंड अहमदनगर. ये बीजा जो वो है आपका बहमनी खंड 5 जगहों में टूट गए: बेरार में, बिडार में, गोलकोंडा में, बीजापुर में एंड अहमदनगर. ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बहमनी एंड विजयनगर किंगडम. विजयनगर एंड बहमनी किंगडम पर नेबरिंग किंगडम, पड़ोसी थे इन डेक्कन. बोथ फॉट बार विद ईच अदर, जो लोग आपस में बार फाइटिंग कर रहे थे फॉर 200 ईयर्स, 200 साल तक. दे बोथ वांटेड टू कंट्रोल द पोर्ट रीजन ऑफ गोवा एंड फर्टाइल गोदावरी बेसिन. In 1565 CE, the Deccan kingdom, formed by the disintegration of Bahmani kingdom, united to defeat Vijayanagar. The fierce battle followed and Vijayanagar kingdom was completely destroyed. But warring factions of these Deccani kingdom could not remain united for long and started fighting amongst each other. The strength of Deccan kingdom declined and paved way for the Mughal to occupy the territories in the Deccan. Okay, so it is all about the chapter number 5. I hope you will enjoy, and all the students of class 7th learn these points and do practice zone 1 to 3 and send me to my WhatsApp group. Okay, bye bye students.